Hey students, hi everybody, a very good morning to everyone right there. Welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this very particular session, wherein we are going to deal with one of the very important chapters from our syllabus, and we are going to begin our session right from today. So the very first chapter that we are going to start with is A Letter to God. Okay, so everyone just give me a confirmation in the comment section quickly that you all can see me well and you all can hear me well, because this is really important for me. Then only I'll make a move ahead. Okay. Hi everybody. Hello guys. A very good morning everyone. How are you all doing? I hope that Sunday is really going well for everyone. And of course it's gonna be so nice because we are going to start with our English. This is for all the new students who have just landed into their 10th standard and who are aspiring to crack the board 2022-23 session. Okay, hey everyone. Hi, good morning. Unnati, my dear, my darling, we have just started the class and you want me to take the Menti. Menti for what? The very thumbnail says no, line by line explanation is going to be there. So how come Menti is going to be there? Okay, so just line by line explanation is going to be there. Okay, hey everyone. So you guys are new for me. Okay, you all have just landed into your 10th standard. So it's good that you guys introduce yourselves in the comment section, because I'm keeping an eye on the very comment section right now so that I'll become so very much familiar with all my students. Okay, hi everyone. Hi, good morning. Good morning, everyone. Hi, Kausar. Hi, Unnati. Hi, Sneha. Hi, Raj. A very good morning, everybody. Okay, Kushum Lata. You've got a good name. I like that. Okay. Guys, I don't entertain the spammers in my class. If you have been in connection with me, I mean, if you know me, if you have seen my classes, you know this so well that I don't entertain the spammers in the class. I'm sorry, I've got some bad thing. I mean, I've just got some sore throat. All right, you're my old student, Rohit. That's amazing. Hi, Vaishnavi. Hi, Alone Boy. All right, Rohit. Hi, Vaishnavi. Hi, Sneha. Hello, everyone. So guys, kindly share the link of the session with all your friends so that they will also come to know that we are going to start with our classes now, and you all really need to be so very much like regular in all the classes, because now the way I'm gonna conduct the classes, every class is going to be connected with one another. Okay, so whatever I'm gonna do right now, it's gonna be connected with my next YouTube class, which is going to take place right today, right at 12 now, like yeah, 12 p.m. Okay, so be right there. Nikhil, that's amazing. Say I'm very well. I'm not ignoring anybody. Alrighty. I'm not ignoring you. So very good morning, everyone. Okay, I hope that everyone is pretty excited. Okay, so guys, what are we gonna do today? A letter to God, part 1, line by line explanation is going to be there. All right, so if you don't know me, let me give you a very brief introduction about myself. Okay, let's keep it short and crisp. So my name is Preksha Sharma. I'm sure you guys know this by now, and I've done masters in English from Delhi University, and for the past few years I've been giving guidance to a lot of my dear and darling students so that they really become so good in their communication skills and they score good marks in their academics as well. Okay, so I'm sure that you guys are going to really feel so great in all my classes. Alrighty, everyone. Okay, hey, 10th, Shlok, we are gonna conduct the 10th classes later on. Okay, as of now, it's not in the pipeline for the May classes, but from June, we are gonna come up with that. Towards the end of May, I'm gonna conduct two topics on your grammar. One is reported speech, and the second is modals. Okay, so the tenses would be dealt in your June sessions. Alrighty, people. Okay, hi everyone. Alright, Ronit, thank you so much for that. So moving ahead, everybody, let me tell you all one important thing before I tell you about the Telegram. See, I will be taking the classes for all the 10thies on daily basis right at 2 p.m. Please note the timing. I'm announcing this in the class itself so that you guys don't miss anything, which is really going to be super helpful for all of you. Okay, so I'll be conducting the classes at 2 p.m. on a daily basis for the students on weekdays. I mean for the 10thies on weekdays. And along with that, I am going to
conduct the special classes side by side on the app. Okay, so whatever we are going to do here on the YouTube, you will find a link with those classes in the special classes. Why? Because I'm gonna take up the questions, NCRE questions, as well as the extra questions, and those classes are going to be literally very important. Everybody, let me tell you right from the beginning of our sessions, please don't miss any of my classes, because I'm gonna tell you everything in detail. And the second thing is, if you will just go with me, all right, along with like in knowing your answers and questions, that'll be very very helpful for your last exams. Okay, you know, this time no terms are taking place, it's just one single board exam is going to be there, so you will have the entire lot with all of you. Okay, so please make sure that you're attending all the classes and you're keeping an eye on the channel and you're dedicatedly following me on the app also, because I'll be sharing all the notes and the PDFs on the community. So it's important for all of you to join me right there and to keep yourself really really updated. Alrighty people. Okay, so now moving ahead, we have got the Telegram channel. I'm sure that you guys are aware of this very particular channel. If you're not, please make sure you're joining this. The reason being, herein you'll be getting an update from all the educators related to all the upcoming sessions. Okay, so don't miss that at all. Alrighty, now the special classes. See, I'll be telling you this very frankly, everybody. All the special classes, they are absolutely free. Okay, is that clear to everybody? Alrighty, so we see that there are certain spammers in the class. Alright, just don't let that happen, guys. Okay, everybody. Okay, so let's see. Special classes, they are absolutely free. What are you all supposed to do? You all just have to use my code PSH10 and you'll just have to come into the very class. Okay, you can easily enroll without a mess. Okay, for these classes, and these classes are really really amazing. You all can interact well with me. Okay, you all can learn from your favorite educators for free. You all can engage with educators via polls. You all can clear your doubts also in the special classes. So for the top special classes, please visit the links in the description given below. Okay, so that was basically for all the students who were earlier in their 10th grades. Okay, now moving ahead, today right at 2 p.m. I'm gonna deal with the NCRE questions of the chapter A Letter to God. Okay, the code is PSH10. Kindly use that. Be right into the very class. Okay, so part 1 we are going to do, I mean like some like a half part of the chapter we are going to do in this session, and the rest half we are gonna do right at 12 p.m. Okay, so today it's gonna be an English day. Make sure that you guys are definitely with me. Alrighty. And everyone, this is exclusively for all of you, an amazing information exclusive plus course is launched by me. It's gonna be started right from tomorrow. Okay, the timings would be 6:30 p.m. Okay, 6:30 to 7:30 p.m. This is for all the students who have just come into their 10th standard already. So this is for the students who are going to aspire for 2022-23 batch. Complete course on English literature is going to be there. Just use the code PSH10 and become a plus subscriber. Okay, we have got like amazing plans, and we are soon going to increase the prices as well. Before the prices go high, make sure that you're taking a plan for yourself and meeting me in the very plus classes. Alrighty people, is that clear to everyone? Now, let's make a move ahead. A letter to God. Okay, we are gonna deal with part 1. All right, it has been written by G.L. Fuentes. Everybody, if you have been attending my classes, you must know that I always stress on the fact that you need to know the name of the chapter. That is the title of the chapter perfectly. That is how English is understood. And you need to know the name of the writer, the author who has written the chapter perfectly too. Okay, these two things, they are very important. Learn them the right way. A lot of students write like this, the letter to God, which is absolutely wrong. It's a letter to God. All right, this is how you need to remember it. And then the person who has written it is G.L. Fuentes. Please learn the spelling. It's Fuentes. Okay, please remember it. It's for your good. Alrighty, people, it's a letter to God. Alrighty, is that clear to everyone? Is that clear, everybody? Yes. Okay, so now let me just have something, everybody. I mean, just let me know something in the comment section what you guys are aware of about this chapter. What is your understanding? What do you know about this chapter? I mean, you guys must have done this so far. I mean, it must have been done in your school so far. So what is your understanding? Alrighty, Ronit, my dear, you're blocked. Okay, we'll meet later on. Okay, come and spam in some other class, and then the other educator is going to block you. Anyway, guys,
Come on, everybody. Here we go. Yes, everyone, come on. Tell me, Garima. Okay, there's a farmer. His name is Lencho. Okay, alrighty. Yeah, Varish, I remember you there. I hope that you really score good marks in your term too. Alrighty, okay. All right, there a person named Lencho. Okay, alright, this chapter is about. Okay, ठीक है, मैं start करती हूँ because I think that you guys are not really into understanding the chapter well. Let me get started with this chapter. Okay, so first I'm gonna tell you that what exactly is there in this chapter. Okay, we are gonna start with the introduction. So the chapter, a letter to God. Okay, you can understand it right from the title of the chapter. अ लेटर टू गॉड सिंपल है ठीक है आपको क्या समझ में आता है कि एक लेटर है जो भगवान को दिया जा रहा है यही समझ में आता है ना बहुत सिंपल है देखो in English how do you understand like what exactly the chapter is talking about or what exactly is it about you get to know it right from the very title or the name of the chapter a letter to God यानी कि एक लेटर है जो भगवान को दिया जा रहा है सिंपल सा ठीक है अब हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या दे रखा है इस चैप्टर में हमें ये दे रखा है कि एक इंसान है जिसका नाम है लेंचो द स्पेलिंग मैटर्स अ लॉट इट्स Lencho ओके ही इज अ फार्मर ऑल राइट कौन है वो एक फार्मर है ओके सो द एंटायर स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस वन मैन हुज नेम इज लेंचो all right so we see that this person is a farmer all right and guys farming is one of the professions which is really very much hard working बहुत मेहनत का profession है and the farmers they really depend upon the nature okay they really depend upon the nature why because rain is something which is really prominent and important for their fields ठीक है मतलब जो उनकी फील्ड्स होती हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है all right so we see that this is a story which is revolving around what which is revolving around the idea of having unquestionable का मतलब ये होता है कि जिस पे आप कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकते हो unwavering मतलब जो हिलाया ही नहीं जा सकता अनशेकेबल इज ऑल्सो सेम जिसे आप हिला ही नहीं सकते तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो बता रही है हमें अनक्वेश्चनेबल अनवेवरिंग एंड अनशेकेबल फेथ यानी कि बिलीफ यानी कि यकीन ऑल राइट बिलीफ किस में भगवान में all right this is what the story is all about it is talking about an extreme faith it is talking about a faith which is can't be moved by anything all right and it has been portrayed by a person all right by a very normal person with a very important profession and what is that and sorry and who what is the name of the person lencho all right he's a farmer all right he is basically what he is a man of agriculture please make sure that you are making note of everything that I'm telling you all right here because like this is very important that you understand the depth of the chapter all right are you all with me are you all with me everybody are you all with me are you all understanding this because I really need to know from all of you then only there is any point of making you all understand this yes everyone yes, just tell me, give me a thumbs up or anything in the comment section so that I'll come to know about this. Crystal clear. Okay, here we go. Guys, get this so straight. If you guys are talking about anything else which is not contextual to what we are doing right now, you are straight away blocked. Do you get that? You are straight away blocked. I'll not even think the second time I'll block you right away. So that means you'll never be having any access into my classes. All right. Is that clear to everybody? Yes? Okay, everyone. ठीक है सो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट चीज ऑल राइट सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टोरी आई मीन वेयर एग्जैक्टली द स्टोरी सेट ये जो स्टोरी है वो सेट हुई है लेटिन अमेरिकन कंट्री में ऑल राइट ये मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रही हूँ स्टोरी का सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरी इज ऑल अबाउट नाउ लेंचो कौन है लेंचो एक फार्मर है हु इज द प्रोटैगनिस्ट बेसिकली रेफर्स टू द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी so herein the protagonist is Lencho.
All right. So what do we see that his field, यानी कि जो उसका खेत है, okay, they got devastated. Devastated का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, destroy हो गया. All right. किसकी वजह से? हेल स्टॉर्म की वजह से. What do you mean by hail storm? Hail storm is like when you have heavy pieces, all right, of your ice, okay, they fall, यानी कि हिंदी में कैसे बोलेंगे? ओले पड़ना. All right. So what does he do after that? He decides to write a letter to God and then the story unfolds. ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो हम देखेंगे. ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रो दे दिया है that Lencho is a farmer, he is a man of agriculture, he depends entirely on like his fields, they depend upon the rain and he's waiting for that, and when it happens then finally the hailstorm started and everything got destroyed. So now let's move ahead. So what exactly is the theme of this particular chapter, everybody? Guys, ध्यान से सुन लो क्योंकि जब मैं इसका टेस्ट लूंगी, I want all of you to give me the right answers. Extreme faith. Okay, like it's not just faith, it's extreme faith. Okay, to such a great extent that nothing can move his faith. All right. Is that clear, everyone? शंभवी hailstorm होता है तूफान, ठीक है, बर्फ का तूफान. ऑल राइट. और हेल स्टोन होते हैं वो जो ओले पड़ते हैं, यानी कि एक ओला जो बोला जाता है, यानी कि एक स्टोन ऑफ आइस, दैट इज नोन एज हेल स्टोन. ऑल राइट. इज दैट क्लियर? फेथ इन गॉड, राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Shambhavi, I hope that's clear to you. All right, so this is very important that there is an extreme faith in the very character, I mean the very person. This is one of the themes which is running in the entire chapter throughout. All right, you'll see that. Okay, you will exactly see that. Clear? Okay, clear? Good, everyone. Now let's make a move ahead. So line by line explanation is going to be there. Before you read, section is given in your book. Let's have a look at it. They say faith can move mountains. यानी कि अगर आप में विश्वास है तो आप चट्टानों को हिला सकते हो. All right, but what should we put our faith in? लेकिन हमें किस में विश्वास करना चाहिए? This is the question this story delicately poses. ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये स्टोरी बहुत सुंदरता के साथ आपके आगे रखती है. ठीक है. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. ये हमको पता चलता है. लाइक ही इज राइटिंग. लेंचो एक फार्मर है जो एक खत लिखता है भगवान को. व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. कब लिखता है? जब उसके जितने क्रॉप्स हैं, ठीक है, यानी कि जो उसके क्रॉप्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं. ruined, destroyed, devastated are the synonyms. Okay, please make a note of everything that I'm telling you all right now because later on you all need all these things. All right, is that clear? Okay, so Lencho is a farmer who is writing a letter to God and his crops, they are ruined. He asked for what? He asked for money from God. And what is that? He asked for 100 pesos. Okay, and pesos is basically a currency. I'm gonna tell you all that. Does Lencho's letter reach God? This is what we are gonna see. कि क्या उसका letter भगवान तक पहुंचता है. So everybody in the comment section, does his letter reach? Does his letter reach God? Yes. In the comment section, everybody. Have you all read it? Guys, this is my rule. I've been always saying this, that before I come up with a chapter, you guys would come to know right from the thumbnail. Try to read the chapter on your own because reading on your own gives you an understanding and you may have certain questions in your mind. And you all can ask those questions in the class. Okay, no. Yes, of course, you guys know it. Tejasvi, Manvi, Swati, Ranjit, Prince, Manvi. Very good, guys. You guys know it well. Okay. So, does God send him money? This is also a question that we see. कि क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. See, this is very important. मैं अभी ही आप लोगों को बता देती हूँ. देखो, मेरी सारी क्लासेस आप लोगों को अटेंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं छोटे-छोटे पॉइंट्स बीच में मेंशन करती हूँ. And all those छोटे-छोटे points, they are very important for your understanding. Alright, English is not as easy as it appears to be. It can really be so tough. It can really hamper your marks in your examination. It can play with you in minutes with its language. All right, so please make sure that you understand the core of the language. So before you read section is not something that you're gonna ignore and you're not going to read in your chapter. Whatever is given in your chapter, please read it. Okay, you guys have a lot of time. Your vacations are going to be started soon. Please make sure that you're reading the chapters by heart. Reading by heart is always important. All right, so please make sure that you're not missing out anything. Now let's get started, everybody. All right. So we see that the chapter says the house.
Okay, the house. Now this is something which is written like this. I mean, in capital it has been written in your book. You'll see that like all your chapters, the very first letter, it is all caps. That means कि पूरा capital में दे रखा है. Q. One thing is that this is the writing style of the book. Okay. Second thing is that when we highlight a particular word in any sentence that way, this means we want to talk about the importance of that particular thing. यहाँ पे द हाउस, द क्यों यूज करते हैं हम इंग्लिश में? द हम तब यूज करते हैं जब हम एक डेफिनेट चीज की बात कर रहे होते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं, जब हम एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको सिनोनिम्स दे दिए हैं, डेफिनेट, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक. ओके, तो यानी कि द हाउस, यानी कि ये सिर्फ एक ऐसे घर की बात कर रहे हैं जो एक्चुअली चैप्टर में इंपॉर्टेंट है. सो द हाउस. अब इसके आगे यू विल सी अ डैश इज गिवन. व्हेनेवर अ डैश इज गिवन आफ्टर अ वर्ड, दैट मींस उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है. इट्स नॉट अ हाइफन. ओके, एक जब भी एक डैश दिया जाता है इसका मतलब अब मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो यानी कि कौन सा घर, द हाउस, द ओनली वन. सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं बेटा, प्लीज मेक श्योर कि ध्यान से सुन रहे हो. द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि द हाउस क्यों बोला गया? क्योंकि वो एक अकेला घर है पूरी वैली में. ऑल राइट, और कहाँ है वो? अब अकेला घर है, अब कहाँ? वैली में, किधर? उसके लिए आगे एक और डैश दिया जा रहा है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. यहाँ पे देखो द फिर से आया, द क्रेस्ट. क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि एक अकेला घर है. कहाँ है? जो वो माउंटेन, यानी कि माउंटेन यानी कि हिल जो है, ठीक है, पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है वो घर. ठीक है, और वो एक अकेला घर है. हाउ डू आई कम टू नो कि अकेला है? क्योंकि यहाँ पे ओनली का यूज किया गया है, द ओनली वन. So only here is telling me that there is no other house around. All right, questions can be any way. In your examination, be smart enough to understand कि क्या आंसर होना चाहिए. All right, you need to know everything. All right, is that making sense? वैली का मतलब होता है घाटी. All right, वैली का मतलब क्या होता है? घाटी. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. All right, is that clear? Hi Amit, hi, I remember you. For vocabulary, I'd always been saying, Amit, please start reading the books, okay? Please start reading. Read as much as you can. Okay? So now we see from this height, यानी कि कौन सी height? उस घर से. From this height, one could see. Could क्यों use किया गया है? Could एक modal verb होता है जो आपकी ability को दर्शाता है. ठीक है, सो इसलिए इन्होंने बोला कि उस घर से क्या देखा जा सकता था. उस घर से एक कोई भी इंसान एक रिवर देख सकता था, और क्या देख सकता था? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. राइप कॉर्न यानी कि जो वो फील्ड था, किस चीज का फील्ड था? कॉर्न था. कॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? एवरीबडी. ग्रेट रोने, ग्रेट. यस नीरज, गो अहेड विद योर डाउट. All right, so उस घर से क्या दिखाई देता था? देखो पहली चीज, you must be clear about this, that there was only one house. All right, and where was it situated? It was situated on the crest of a low hill. ठीक है, यानी कि हिल जो था वो लो था, ठीक है, लेकिन उसकी चोटी पे घर बना हुआ था. ठीक है, यानी कि बिल्कुल उसके टॉप पे घर था. और यहाँ से हमें क्या दिखता था? हमें रिवर दिखती थी, और साथ के साथ हमें एक फील्ड दिखती थी. द फील्ड क्यों लगाया है मैंने? क्योंकि मैं आप बताने वाली हूँ कि वो फील्ड किस चीज की है. राइप, यानी कि राइप का क्या मतलब होता है? मक्का. वेरी गुड. राइप का क्या मतलब होता है? यानी कि पके हुए मक्के. ठीक है, उसकी फील्ड दिखाई दे रही थी. इट वॉज डॉटेड विद द फ्लावर्स. दिस इज अ वेरी वेरी गुड एक्सप्रेशन बाय जीएल फ्यूंटिस. डॉटेड विद फ्लावर्स का मतलब होता है कवर्ड विद फ्लावर्स. All right, it was all wrapped with flowers that always promised a good harvest. यानी कि वो हमेशा एक अच्छी फसल ही देते थे. All right, हमेशा एक अच्छी फसल ही देते थे. The only thing the earth needed, the earth here basically refers to the field. All right, the earth here refers to the field. So जिस चीज की सिर्फ जरूरत थी वो क्या थी? एक downpour or at least a shower. Okay, so downpour का क्या मतलब होता है? A heavy rainfall. All right, it was needed. और यहाँ पे इसलिए लगाया या तो एक बहुत अच्छी सी बारिश हो जाती,
ठीक है, या फिर एटलीस्ट, प्लीज मेक श्योर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज दैट एटलीस्ट इज वन सिंगल वर्ड. All right, when you're gonna write this in your examination, the examiner checks everything. So at least is never written like this, okay? At least there is a gap. All right, make sure that you remember this for your lifetime. और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि या तो ड्रिजल हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए, कि थोड़ा पानी मिले फील्ड को, ऑल राइट, या फिर एक अच्छी सी बारिश हो जाए. दैट इज व्हाट वी कम टू नो. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस क्लियर? इज देयर एनी डाउट? Is there any doubt whatever we did right now? Anyone? Any doubt, guys? Just let me know in the comment section. Is that clear? Say yes. Quickly do that. Quickly say yes if it's clear. And if there is any doubt, just let me know about it. Right? Clear? Okay, great. So let's make a move ahead. Please make sure vocab learn kar rahe ho. Vocab is very, very important. Okay, it's really important from your examination point of view. Now let's make a move ahead. Throughout the morning, all right, throughout the morning, what do we see? Lencho, okay, now Lencho कौन है? इसके लिए dash दिया गया है. Who knew his fields intimately, okay, so Lencho एक ऐसा इंसान है जिसको अपने fields यानी कि अपने खेत के बारे में, all right, बहुत अच्छे से, intimately का क्या मतलब होता है? Closely. All right, जिसको अपनी fields के बारे में बहुत अच्छे से पता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो वो क्या कर रहा था? This is very important, everybody. Hi Suhani, hello dear. This is very important, everyone, कि वो पूरी क्या कहते हैं, सुबह क्या कर रहा था? Question can be there in your examination. What was Lencho doing before the downpour? Or what was Lencho doing before the rainfall? So the answer is that throughout the morning before the rainfall, he was not doing anything else except looking at the sky towards the northeast. So you guys need to remember that what was he doing? He wasn't doing anything. All right, he was so very well aware of his fields. Why are we saying his fields? Because he was the owner of those corn fields. Remember, किस चीज के fields थे? कॉर्न के fields थे. And he knew it how? He knew it intimately. Intimately का मतलब closely वो जानता था उनको. और उसने कुछ नहीं किया था. He was just doing what? He was just looking at the sky towards the northeast. आप जब भी हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है? ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं. अभी जो बच्चों के एडिटिंग एरर करेक्शन आए हैं, उसमें ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है. तो दिस इज व्हाट आई डू व्हेनेवर आई टीच. मैं आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी बीच बीच में बताती रहती हूँ. जब भी हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द बिफोर ई, the before it. All right, like towards the northeast. This is very important. कौन सी डायरेक्शन से आप आएंगे बादल, जहां से बारिश आएगी, वो नॉर्थ ईस्ट है. All right, is that clear? Cornfield. All right, is that clear? चलें आगे. Clear to everybody? मैं make a move ahead, everyone. Quickly tell me in the comment section. Yes. Yes. बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट नहीं बेटा, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ से आ रहे हैं, बिटवीन नहीं, वहां गलत हो जाएगा. नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ वो देख रहा था. ऑल राइट, क्लियर? चलते हैं अब आगे. अब क्या होता है? नाउ यू सी, देखो यहाँ पे अब आएगा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन, ओके, इन द इन्वर्टेड कॉमा क्लोजेस. Whenever something is written under double inverted commas, everybody just make a note of what I'm telling you all right here. Whenever something is being given under double inverted commas, that means that those are the words directly spoken by a speaker. यानी कि किसी ने वो बात खुद से बोली है. So now he is saying we are really going to get some water women. Who is this woman? Woman is wife of Lencho. Her name is not given in the chapter. And we are going to get some water. So some water here basically refers to rain. ठीक है? So अब ये कहता है कि अब हमें सही में कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि अब बारिश होने वाली है. उसको कैसे पता चला? How did he come to know? Anybody? We just did that. How did he come to know that we are gonna get some water? Anyone? Can you let me know in the comment section? बेटा दीपक, हेलस्टॉर्म का मतलब होता है बारिश वाला तूफान. सॉरी, आई मीन ये जो आईसी तूफान होता है, ठीक है, उसे हेलस्टॉर्म आप बोलते हो. और हेल स्टोन क्या होता है? ओला, एक जो पड़ता है, जो वो क्या कहते हैं, स्टोन होता है बर्फ का, जो छोटा सा जो पड़ता है धरती पे, उसको आप हेल स्टोन बोलते हो.
ऑलराइट, हेल स्टॉर्म का मतलब है वो जो तूफान होता है. ऑलराइट, yes, wife of Lencho, how did he come to know that we are gonna get some water? Tell me, मैंने बताया आपको पहली वाली स्लाइड में. Yes, Surinder, that's absolutely correct. मैंने यहाँ क्या बताया? He was looking towards the sky. Okay, and he might have seen the clouds. Alright, so by just looking at the sky, he was guessing that it's about to pour, it's about to rain. Alright, please make sure कि दिमाग साथ के साथ हमारा चल रहा है. Questions are very important. Ola, yes, Gaurav, you're absolutely right. Okay. नहीं, विन से नहीं बेटा, विन से नहीं पता चल रहा है आपको. देखो ना मैं कहां से आ रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए बात करो. मैंने यहां से बाद में आपसे क्वेश्चन, आई मीन वहां से इमीडिएटली क्वेश्चन यहाँ पूछा है. ऑल राइट, नाउ द विमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, व्हाई आर वी सेइंग द हेयर, हमने द क्यों लगाया इधर? क्योंकि अब हम उस विमेन की बात कर रहे हैं जिसको हमने पहले रेफर कर दिया. सो वेयर डू वी यूज द? We can use the for the things that we have referred to in a previous conversation. All right, तो यहाँ पे द विमेन जो क्या कर रही थी, सपर बना रही थी. व्हाट डू यू मीन बाय सपर? इट्स एन इवनिंग मील, टिपिकली अ लाइट और इनफॉर्मल वन, यानी कि खाना बना रही थी शाम के लिए. उसने क्या रिप्लाई किया? यस, गॉड विलिंग. दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोजेस. ठीक है, यानी कि ये किसने बोला? विमेन ने बोला. गॉड विलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. यहीं से हमको जो थीम है फेथ की वो पता चलने लग जाती है. व्हाट डज शी सेड? गॉड विलिंग. अकॉर्डिंग टू हर व्हाट डज इट मीन? कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा. ठीक है, दैट इज व्हाट शी मेंट. So this is what we come to know, that the faith was running in the family of Lencho. All right, because his wife herself replied when he said that we're gonna get some water, she said yes, God willing, जैसे भगवान की इच्छा. All right, the older boys were working in the field. It's a very important question again. What were the children doing when the women was preparing the supper? So the older boys, we don't know how many boys, we are not aware of it. Okay, we just know that there were more than one. So the older boys, they were working in the field. Which field? Which field were they working into, everybody? Quickly, every detail matters. कौन से field में काम कर रहे थे? सुपरलेटिव डिग्री नहीं था बेटा, वो सुपरलेटिव डिग्री कहां से आएगा द विमेन में? वो तो हमने पहले रेफर किया है ना. Yes, everyone, cornfield, absolutely right. Okay, while यानी while हम कब यूज करते हैं? जब हम कुछ ऑपोजिट बात करते हैं तो उसमें आप कंजंक्शन while लगाते हो. While the smaller ones, okay, आप देखो हम द लगाते जा रहे हैं क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं बड़े और छोटे. So this is important. The older ones, they were working in the fields, while the smaller ones, they were playing near the house until the women called to them all. And what did the women say? Come for dinner. Okay, it was during the meal that just as. तो यानी कि अब क्या हुआ कि उन्होंने खाना खेल रहे थे बच्चे बाहर और बाकी के बच्चे फील्ड में काम कर रहे थे. फिर फाइनली द मदर कॉल देम कम फॉर डिनर. और जैसे ही ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग का मतलब जब वो खा रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यानी कि जैसे कि लेंचो ने कहा ही था. प्रिडिक्शन का क्या मतलब होता है? लाइक स्टेटेड और एस्टिमेटेड एज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, लाइक फोरकास्ट, मतलब पहले से ही ये बोला कि ये चीज होने वाली है. लेंचो ने क्या बोला था? नाउ वी आर गोना गेट सम वाटर. वैसा ही हुआ. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी कि बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की बिगेन टू फॉल, यानी कि बारिश होने लगी. ऑल राइट, इन द नॉर्थ ईस्ट से ही, नॉर्थ ईस्ट से huge mountains of clouds, okay, could be seen approaching. Now this is very important. Huge mountains of clouds. Okay, what does this mean? Can anyone please explain this to me? What does this mean? Huge mountains of clouds. What do you mean by that? Anyone? It's very, very important for your examination. Huge mountains of clouds. What do you mean by that? What has been compared with clouds here? Is this metaphorical? Everyone. Manvi, we are not told about that. This is what I told you. ठीक है, ये हमें नहीं पता कि कितने बच्चे थे, हमें बस ये पता थे कि ओल्डर बॉयज थे और यंगर बॉयज थे. कितने थे ये बिल्कुल नहीं पता. ठीक है. हाय अंजलि, माउंटेन्स. हाय अपूर्वा, हेलो. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का क्या मतलब है? ह्यूज माउंटेन्स, एवरीबडी हु इज गोइंग टू टेल दिस टू मी? Anyone?
Explain it. No. What is mountain? What is cloud? Cloud is compared with huge mountains. Yes, Swati, that is absolutely correct. That clouds are very large. Okay, cloud is seen as big. Very good, Archana. Very good, good, good. Very good. So यानी कि huge mountains of clouds का ये मतलब है कि जो वो clouds थे, बादल थे, वो इतने बड़े बड़े थे जैसे कि mountains हो. So this is a metaphorical representation. Everybody, please remember these things that I'm telling you all. ठीक है, तो ये क्या है, ये मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है. मेटाफोरिकल का क्या मतलब होता है, जब आप इनडायरेक्टली किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो. तो यहाँ पे जो बड़े बड़े क्लाउड्स बादल दिख रहे थे वो कंपेयर किए गए हैं, ऑथर ने कंपेयर किए माउंटेन से. ठीक है, तो वहां से क्या दिख रहा था, बहुत बड़े बड़े बादल वहां से आ रहे हैं. ऑल राइट, तो कुड बी सीन, यहाँ पे कुड इज नॉट टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी, इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट दे वर विजिबल. ओके, द एयर, अब वहां पे बाहर कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसा था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर देखा जाता है कि एटमॉस्फेयर कैसा था जब बारिश होने वाली थी, हवाएं कैसी थी. तो हवा कैसी थी, इट वॉज फ्रेश एंड स्वीट. रिमेंबर दीज टू वर्ड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ वॉज द एयर व्हेन इट वॉज अबाउट टू रेन, द एयर वॉज रियली फ्रेश एंड इट वॉज स्वीट. ओके, so the men went out for no other reason. Can you please tell me who is the men here? It's important. Hi guys. Hi Yukti. Hello. Comparison is there. Very good. So what is it? The men went out. Who is the men? Who is the men, everybody? The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, Lencho, absolutely correct. Okay, so guys, this is very important. Like, how did Lencho behave when it started to rain? All right. And why did he behave like that? The very first thing is that he is a farmer. His entire life depends upon his fields. Okay, he can earn his bread and butter through what? Through fields. All right, and he can like serve, he can get food for his family only through fields. So rain is really one of the very important ingredients of a farmer's life. Please make sure you're understanding everything that I'm telling you all. All right, so what did he do, like when it was just about to rain? Okay, he went out. Okay, और वो बाहर किसी और रीजन की वजह से नहीं गया, उसको बस वो जो बारिश थी अपनी बॉडी पे फील करनी थी. He wanted to feel, he wanted to enjoy those drops that were falling. Okay, and when he returned मतलब जब वो वापस से अंदर आया, ठीक है, he exclaimed यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब he cry out suddenly in surprise. So cry out इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोने लग गया, मतलब उसने खुशी से बोला. ओके, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ उसने बोला, बहुत खुशी के साथ, चेहरे पे स्माइल के साथ. What did he say? These, again, the inverted comma begins, and this is very important. These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives, and the inverted comma closes. This is very, very important. Yusuf, like my pleasure dear. I hope you really score good marks. तो यहाँ पे अब क्या होता है, वो क्या बोलता है वापस आके अपनी अंदर मतलब एज इन जब वो अपनी वाइफ के पास आता है, वो क्या कहता है कि ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से टपक रही हैं. ठीक है, जो आसमान से गिर रही हैं, ये सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं है, ये नए सिक्के हैं. ओके, न्यू कॉइन्स. व्हाट डज इट मीन? Like he compared the raindrops to new coins. Please remember this. Okay, बच्चों को बहुत confusion होती है क्योंकि आगे हम देखेंगे वो hailstone को silver coin से कंपेयर कर रहा है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट रेन ड्रॉप्स वर बीइंग कंपेयर टू द न्यू कॉइन्स. न्यू कॉइन्स क्यों? क्योंकि बारिश पड़ रही थी, फसल और अच्छी होती, वो लोग उसको बेचेंगे, उससे वो पैसा कमाएंगे. So ultimately the money that he is going to earn by selling his crops, he would getting the new coins. That means he'll be getting money, which is going to be the new money for him. All right, is that clear? Yes Shagun, yes, absolutely right. Okay, so यहाँ पे भी एक तरीके से आपका मेटाफर आता है क्योंकि आपके रेन ड्रॉप्स को इनडायरेक्टली न्यू कॉइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि कंपेयर किया जा रहा है. सो अब वो क्या कहता है, जो बिग ड्रॉप्स है दे आर 10-cent पीसेस. ओके, मेटाफर है, यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो कैसी लग रही हैं, 10-cent पीसेज है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 है. So this is just a kind of like expression of contentment, an expression of satisfaction, an expression of happiness and excitement. He is like, wow, अब बारिश हो गई है, अब हमारी फसलें बहुत अच्छी होंगी, हम इन्हें बेचेंगे और इससे पैसा कमाएंगे. So he was filled with a lot of like excitement and happiness.
नाउ विद अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, वो जो उसके चेहरे पे खुशी झलक रही थी, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी कि उसने देखा अपने राइप कॉर्न को, रिगार्डेड मतलब उसने फिर से देखा अपने कॉर्न फील्ड को, ठीक है। अब वहां पे क्या थे, चारों तरफ फूल ही फूल, फ्लावर्स थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। तो जब उसने वापस से देखा, उसने क्या देखा कि सारा फील्ड जो है वो कवर्ड है। ड्रेपिंग का मतलब होता है टू कवर, प्लीज रिमेंबर द वर्ड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। खुशुमिलता मेटाफर बेटा एक फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। मेटाफर का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो बिना लाइक और एज को यूज करे, यानी कि अगर मैं खुशुमलता के लिए बोलूं दैट शी इज लाइक अ रोज, तो यानी कि मैंने डायरेक्टली कंपेयर किया आपको रोज से, कैसे, मैंने लाइक का यूज किया। या फिर मैं ऐसे बोलूं शी इज एज प्रिटी एज रोज, तो यहाँ पे भी मैंने आपको डायरेक्टली कंपेयर किया, ठीक है, रोज से। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ शी इज अ रोज, तो यहाँ पे ना मैंने लाइक का यूज किया ना मैंने एज का यूज किया, तो इसका मतलब मैंने आपको इनडायरेक्टली रोज से कंपेयर किया और इनडायरेक्टली मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत सुंदर हो, ठीक है। तो जब भी हम इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं उसको हम मेटाफर बोलते हैं, जब हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं उसको हम सिमिली बोलते हैं, ठीक है, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। ऑल राइट, अब हम यहाँ देखते हैं क्या होता है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था, ही वॉज लाइक दैट द एंटायर फील्ड वॉज कवर्ड विद with in a curtain of rain. This is again a beautiful thing. Guys, language पे भी question आ सकता है that what is the language that is being used by GL Fuentes in the chapter. तो जो language है that is very beautiful. You have to take certain chunks from the chapter like we did what? यहाँ पे हमें पीछे एक और beautiful chunk मिला था, क्या था वो? Here it's a curtain of rain. पीछे हमने क्या किया guys? What did we do? Come on, tell me. You all are studying, right? Simile. Surinder, that is simile. No worries, Kushumlata. That's nice. You got a good name. I like your name. Yes, tell me क्या था पीछे, अभी हमने क्या किया है? Let me see how many of you are listening me very nicely. Guys, don't miss to attend the special class. उसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवा दूंगी आज, तो आज के आज ये चैप्टर डन है आप लोगों का। प्रिडिक्टेड दीपक मैंने बताया आपको, आप पहले से फोरकास्ट कर रहे हो, मतलब आप पहले से बोल रहे हो कि ये होने वाला है, उसको फोरकास्ट बोलते हैं। ह्यूज माउंटेन्स, वेरी गुड। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी है, उसको लिस्ट डाउन करो और लिखो और लर्न करो। ह्यूज माउंटेन्स एंड ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, तो यानी कि पूरे बारिश से भरा पड़ा था, ठीक है, कवर था। बट यहां से अब आपकी स्टोरी चेंज होगी, यहां से नाउ हाउ हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेंज टू सैडनेस, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, प्लीज रिमेंबर विंड कैसी थी, यू आर नॉट गोना राइट इन योर आंसर्स कि वो एक विंड थी बस, नो, यू हैव टू टॉक अबाउट अ स्ट्रॉन्ग विंड, बिकॉज विंड एक्चुअली blows when it's about to rain and that's a normal wind which is not creating any devastation or destructive things. All right, so but here now the wind is going to, how, what was the nature of wind? The nature of wind was strong, बहुत ज्यादा strong था, ठीक है। It began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. So now what happened is बहुत तेज हवाएं चलने लग गई और हवा के साथ साथ अब जो बारिश थी, ठीक है, जो बारिश की बूंदें थी छोटी छोटी, अब वो हेल स्टोन्स में कवर हो गई। हेल स्टोन्स क्या होता है? चंक्स ऑफ आइस, यानी कि छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं बारिश के, ओले जो आप हिंदी में बोलते हो, वो पड़ने लग गए बहुत तेज तेज। एंड व्हाट हैपेंड, these refer to your hailstones. These truly, truly मतलब really, okay, really, सच में, did resemble का मतलब होता है similar looking, बिल्कुल एक जैसा लगना। They were truly resembling new silver coins. समझ आया? अब हमारे रेन ड्रॉप्स दे वर बीइंग कंपेयर टू व्हाट? न्यू कॉइन्स। लेकिन जो ओले पड़ रहे थे उनको किससे कंपेयर किया गया? दे वर बीइंग कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। ओके, यानी कि जो चांदी के सिक्के होते हैं उससे आप उनको कंपेयर किया गया, क्यों? एनीबडी? यस, दैट्स राइट। No, Kushumlata, his faith never changed. His faith remained constant. It was unshakable, it was unquestionable, it was unwavering. His faith never changed. All right. So tell me guys, why do you think? यहाँ पे भी आपका मेटाफर आ रहा है, यहाँ पे भी मेटाफर है, यानी कि आपका जो हेल स्टोन्स हैं, they were being compared to new silver coins. Why? Can anyone just let me know? जल्दी से बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में, क्यों नहीं चेंज हुआ?
sorry, why has it been compared to the silver coins? What is the reason behind it? वेरी गुड मानवी. बिकॉज इट इज नो 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 स्वाति नहीं बेटा, कंपेयर क्यों किया गया है? मैं सिल्वर कॉइन से, मैं आपको मेटाफर बोल रही हूँ ना कि चांदी के सिक्के से क्यों हेल स्टोन को कंपेयर किया गया है. व्हाट डज इट मीन? वेरी गुड, मानवी ने सही बताया. बिकॉज इट लुक्स वाइट. ओके, बिकॉज इट वाज वाइट. ऐसे मोटे मोटे वो गिर रहे हैं. और सिल्वर, चांदी कैसी लगती है आपको? चांदी कैसी लगती है? साइज की वजह से भी नहीं बेटा. क्यों साइज की वजह से? फिर तो कॉइन ही बोल देते. साइज इतना भी क्या? बिकॉज ऑफ द कलर व्हाइट. ओके, because of the color. Nahi, the correct answer is that the hailstones were being compared to the silver coins because of its color and size. That is what the answer is. Because of the color, because of the color white. All right, is that clear? Yes, yes, Nikhil, you're right about that. Okay, we're gonna deal with the questions in the special classes. Don't miss the classes. Alrighty. Yes, that's right, Manvi, that's right. Now we are moving ahead. The boys, all right, the boys, yani Kamaya, exposing themselves to the rain, Kama again, ran out to collect the frozen pearls. Now, guys, what happened? All right, see. Here, what do we come to know? We see क्या theme एक और आई बीच में, हमारी theme आई nature versus man. ठीक है, एक तो आपका faith तो चल ही रहा है. ठीक है, faith is just running in the entire chapter. Along with that, we have nature versus man. Where do we see that? When the nature turned itself completely. All right, nature is independent. Nature is not dependent. All right, nature does what it wants to do. While man is dependent on nature. Okay, man is not independent. All right, a farmer is not independent. A farmer's life depends upon the nature. So we see that nature can destroy a man. Are you all with me? Are you all understanding what I'm telling you all? Please understand, it's an important aspect that I want to tell you all. That nature versus man is given. Nature can destroy a person's life and nature is responsible for giving a life to person. All right. So here in what do we see in the chapter? That nature is going against the human. Nature is going against the man. A farmer whose life depends upon the fields, all right, just gets disturbed and destroyed because the nature decided to go against the man. All right. So this is important. Clear to everybody? Very good. Now we see the boys. So यहाँ पे boys कौन कौन है? Older and younger boys. Alrighty. So what were they doing? Okay. So now यहाँ पे boys, अब दोनों हम consider करेंगे, older भी और younger भी. What were they doing? Exposing themselves to the rain. तो यहाँ पे एक contrast आता है. All right. Contrast क्या आता है कि बच्चों के लिए जो source of enjoyment था, वही बड़ों के लिए source of destruction बन गया. Yani ki the kids, okay, they were enjoying, they were exposing themselves to rain. What does it mean? They were enjoying the rain, they were enjoying the showers. All right, and they were really enjoying looking at the hailstones as well. Why? Because they were just kids. Okay, for them, the environment, the nature was really very blissful. They were enjoying. Okay, for me, if I'm somewhere out, I go to Kashmir or anywhere and I see the snowfall is happening. But maybe if the hailstone also starts happening, it's good for me because I'm enjoying, I'm out, I'm traveling, and it's so picturesque. But for a farmer, it's like completely destructive. Okay, because the fields, they are getting destroyed. All right, so here comes a contrast which is important to understand. This is also one of the very important questions from your examination point of view. Like, what were the different scenarios seen when it started hailstones? What were the different scenarios seen among the Lencho and his sons while it started, while the hailstorm started? Okay, so the children, they were enjoying, they went out. Why did they went out? Sorry, why did they go out? Because they wanted to collect the frozen pearls, and the frozen pearls basically refer to the hailstones. All right, but for the person, I mean for the farmer, it's really getting bad now. यानी कि यहाँ पे अब फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा आया. ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि अब तो ये बहुत गंदा होता जा रहा है. एक्सक्लेम्ड द मैन. एक्सक्लेम्ड यहाँ पे क्या मतलब होता है? अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है वो कौन सा है? वो सैडनेस का है. I hope it passes quickly. What passes quickly? It refers to the storm. And which storm is it? It's hailstorm. So he is like, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला जो storm चल रहा है जल्दी से निकले.
Okay, but अब next क्या है, it did not pass quickly, लेकिन जल्दी से निकला नहीं. All right, are you all understanding? So the nature is being destructive here. All right, and the farmer is really tensed. He is so worried. He is just hoping that the very storm just passes quickly, but it doesn't happen. All right, is that clear, everybody? The next class is going to be right at 2 p.m. Okay, so what happened then? For an hour, please remember this. कितनी देर तक hail storm चला? For an hour, the hail rained on the house. यानी कि जो वो बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश जो हो रही थी, वो 1 घंटे तक चली. और वो कहाँ कहाँ? वो घर पे गिरी, गार्डन पे गिरी, हिल साइड पे गिरी, कॉर्न फील्ड पे गिरी, और सारी घाटी यानी कि पूरी वैली पर भी गिरी. ओके, 1 घंटे तक. ऑल राइट, अब क्या था, यहाँ पे जो फील्ड थी वो वाइट कलर की हो गई थी. वाई? बिकॉज द हेल स्टोन्स वर वाइट इन कलर एंड ओनली द हेल स्टोन्स वर सीन all around on the valley, on the house, on the cornfield, on the hillside. Okay, you see, we have used the everywhere because we are being specific now. We are talking about every specific thing. All right, is that clear? Priyanshu, I'm not ignoring you, my dear. All right, clear? So what was the condition after the hailstorm? The answer is here. All right, the field was totally white in color as if covered with salt. यहाँ पे as आ गया, आपका जो comparison है वो लेके आ रहा है यहाँ पे simile. जो poetic device यहाँ पे use हो रही है वो हो रही है simile. All right, so the entire field, it was white. Why? Because it was being covered with salt. Sorry, as if it was covered with salt. यानी कि जैसे कि नमक की चादर बन गई हो. Because why has it been why has it been compared with salt? Because salt is very white in color. Okay, so that is why it says that it was totally white. Alright, not a leaf remained on the trees. यानी कि एक पत्ता भी नहीं रह गया था पेड़ पे. The corn was totally destroyed. So the corn basically refers to the cornfield, and it was totally devastated. It was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. So earlier, what did we see? There were the flowers in the cornfields. All right, now there were no flowers. Okay. Lencho's soul was filled with sadness. Okay, ये question exam में आता है, statement आती है. Lencho's soul was filled with sadness. Why? Why? Tell me the answer. Why we see? Why we see कि लेंचो का जो सोल था, लेंचोस का सोल, what does it mean? मतलब कि लेंचो was so filled with sadness. यहाँ पे सोल इसलिए बोली गई है क्योंकि वो पूरा दुख में डूब चुका था. All right. First flight, Arpita. Yes. Because of the storm, right? Because अब उसके जो cornfields थे, they were completely destroyed. Not because of the storm, but because his cornfields were completely destroyed. बहुत exact answer देना होता है. Because exact answer दो. वो क्यों दुखी था? क्योंकि वो चाह रहा था कि मेरी cornfields ठीक रहे, लेकिन अब वो बर्बाद हो चुकी थी. Yes, absolutely right. Very good. Intelligent people I have. Very nice. ठीक है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. यानी कि अब दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, डिटेल्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यानी कि 1 घंटे बाद स्टॉर्म चला गया लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया. एवरीथिंग वाज डिवास्टेटेड, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड. एंड वेयर डिड ही स्टैंड देन? ही स्टूड इन द मिडल. आप जब भी कोई स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हो, आप हमेशा द लगाते हो. तो वो कहाँ खड़ा हुआ? वो जो पूरी फील्ड थी उसके बीच में जाके खड़ा हुआ, और अपने बच्चों को उसने क्या कहा, ये बोला उसने, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. यानी plague of locust. Locust क्या होता है? हिंदी में locust, they are basically the insects. Okay, which fly in big groups and destroy crops. आपको locust ज्यादातर हमेशा agriculture fields में ही मिलेंगे. हिंदी में उन्हें टिड्डे बोलते हैं. ठीक है. प्लेग ऑफ लोकस्ट का क्या मतलब होता है कि जब वो लोग, प्लेग बेसिकली होता है कि जब वो लोग आते हैं, ठीक है, ग्रुप में आते हैं और पूरा डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं एक साथ. All right, is that clear? Anushka, I'm really sorry for that. It was already planned, but a very unfortunate incident had taken place at my end. Due to that, it was like cancelled at the very last minute. I'm really sorry for that, but of course, like you can connect and you can discuss if you have any doubt related to any of the questions. Okay, is that making sense to you? All right, are you all understanding this, everybody? Just let me know in the comment section. So what did he say? He basically said, all right,
he basically said that a plague of locust, okay, plague of locust basically refers to the fact that it is basically, just a minute guys, just a minute. Yeah, plague of locust basically refers to the fact that a disease, plague क्या होता है बेटा, plague होती है एक disease, okay, जो मतलब affect करती है दूसरी चीजों को, उसको मतलब एक बीमारी जो दूसरों को इफेक्ट करती है। तो plague of locust का ये मतलब होता है कि जो ये क्या कहते हैं टिड्डे जो ग्रुप में आते हैं, ऑल राइट, जो ग्रुप में एक साथ आते हैं, ठीक है, वो अटैक करते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को, उसको खराब करने के लिए, उसको आप बोलते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि पूरे जो ग्रुप में एक साथ आते हैं उसको आप बोलते हो। मानवी ये मतलब है प्लेग का, ऑल राइट। दीपक प्लेग का ये मतलब होता है, मैंने बताया ना बेटा अभी आपको। Oh, Sarika, that's really amazing, dear. That's really good. Good. Thank you so much. Such a sweetheart you are. All right, would have led. I hope that you're doing good and all your exams went well, right? No, Anushka, that's not happening, my dear. All right, plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. तो उसने बच्चों को बोला कि अगर हमारे टिड्डे अगर हमारे फील्ड्स को अटैक करते ना, तो वो इस तूफान से ज्यादा कुछ छोड़ देते, ठीक है, क्योंकि इस तूफान ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। ऑल राइट, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब वो कहता है कि इस साल हमारे पास कुछ भी अनाज यानी कि मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, यानी कि वो वाली जो रात थी वो बहुत ही ज्यादा दुख से भरी रात थी। फीलिंग और शोइंग ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस। ऑल राइट, सो दैट नाइट वॉज अ वेरी सोरोफुल वन। अब वो फिर से क्या कहता है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वो कहता है हमने जितनी भी मेहनत करी उसका हमें कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope. Now this is very important, the very second theme thing that you all will have to be very clear about. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अब ये वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक व्हाट वाज ही थिंकिंग, व्हाट वाज ही सेइंग, व्हाट वाज ही डूइंग। ही इज लाइक दैट व्हाटएवर वी हैव डन सो फार दैट्स ऑल लाइक completely gone in vain, okay, we are not going to earn anything, we will have no corn and we will be hungry for this entire year, okay. so अब क्या था कि वो जो लोग जो वहां रह रहे थे मतलब मिडल ऑफ द वैली में, उस जो मतलब बीच में, उस घाटी के बीच में जो लोग रह रहे थे वो सॉलिटरी हाउस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें स्टार्टिंग में भी पता चला था ओनली हाउस है, ठीक है। सैडन बाय आइसोलेशन मतलब क्या, सॉलिटरी मतलब अकेले हैं वो लोग वहां पे, उनकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है। नाउ दिस कुड बी अ क्वेश्चन दैट व्हाई डिड ही से दैट देयर नो वन कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, बिकॉज दे वर द फार्मर्स, ओके, मे बी दे डिडंट हैव a lot of people around them who could be their friends and that is why he said like this, ओके। अब वो लोग बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे, देयर वाज अ सिंगल होप। तो वहां पे उनके दिल में, उन जो उस घर में लोग रह रहे थे, एक होप थी, ओके। और वो होप क्या थी, यहाँ पे कोलन इसलिए दिया गया है क्योंकि इस होप को डिस्क्राइब करना है। जब भी आप किसी के आगे कोलन या डैश दे देते हो उसका मतलब कि आप अब उस चीज को डिस्क्राइब करोगे जो आपने एक मोमेंट पहले कहा। ऑल राइट, इज दैट क्लियर। तो वो क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड। गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखो, गॉड प्रॉपर नाउन है और गॉड का जी हमेशा कैपिटल रहेगा, बी इट इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस और एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इज दैट क्लियर एवरीबडी, ठीक है। सो अब क्या होता है, डोंट बी सो अपसेट, इतनी दुखी मत हो, इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, मतलब ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि हम पूरे बर्बाद हो चुके हैं, हमारा बहुत ज्यादा बिल्कुल नुकसान हो चुका है, लेकिन दुखी मत हो। रिमेंबर, ये याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि देखने वाला भगवान बैठा है। दैट्स वॉट दे से का मतलब क्या हुआ कि ये एक जर्नल सेइंग है, ओके ये एक जर्नल सेइंग है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि कोई भूख से नहीं मर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोलने का मतलब है, दैट नो वन कैन डाई ऑफ हंगर बिकॉज देयर इज अल्टीमेटली वन सोर्स हु इज लुकिंग आफ्टर यू, एंड व्हाट इज दैट सोर्स, दैट इज almighty and God. So now here this is very very important, the women of the house, she was working as a motivational spirit for her husband, wherein she was trying to like film the motivation in his husband, oh sorry, in her husband, okay.
ऑल थ्रू द नाइट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल थ्रू द नाइट का क्या मतलब होता है कि पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सो सिर्फ एक होप थी उसके दिल में। अब वो होप क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one conscience. Okay, तो यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है एवरीबडी? लेंचो had only one single hope of sunshine which was to see. Yes, छोटा भीम, you are absolutely right about that. ओके, प्रॉपर नाउन छोटा भीम होता है यानी कि जिसका आप एक नाम हो, जैसे मैंने बोला रिवर, ठीक है, रिवर एक जर्नल कॉमन नाउन है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोल रही हूँ रिवर कौन सी? कावेरी रिवर, तो कावेरी एक प्रॉपर नाउन हुआ, यानी कि मैंने एक प्रॉपर एक नाम दिया उसको। अगर आप बोल रहे हो गर्ल, ठीक है, आपने रेफर किया देयर इज अ गर्ल हु टीचेस इंग्लिश, ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम लड़की की आप बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि प्रेक्षा, यानी कि अब आपने मुझे एक प्रॉपर नाम दे दिया है, ठीक है, तो यानी कि अब आप जब प्रेक्षा की बात कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हो, दैट इज व्हाट प्रॉपर नाउन इज। ऑलराइट छोटा भीम, इज दैट क्लियर टू यू? यस, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? राइट, तो यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी। व्हाट डू वी सी नाउ? वी सी दैट हुज आईज नाउ ऑल थ्रू नाइट ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, बस एक सिंगल होप थी उसके दिल में, और वो क्या? भगवान की हेल्प। और उसने क्या बोला? भगवान को उसने कैसे डिस्क्राइब किया? जिनकी आंखें, ठीक है, जिनकी आंखें, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिली है कि भगवान है और वो सब देख रहे हैं, वो सब देखते हैं, इवन इवन वो भी, मतलब इवन का मतलब वो भी जो एक इंसान के कॉन्शियस में होती है। कॉन्शियस क्या होता है? जो उसके अंदर मन की बात है, जो वो मुंह से नहीं बोल रहा, वो भी भगवान को पता होता है। ऑल राइट, सो कॉन्शियस लाइक जो उसके अंदर इनर सेंस जो होता है, राइट और रॉन्ग, जो मेरे मन में बात चल रही है, वो भी पता होता है। इज दैट क्लियर? हाउ वॉज शी मोटिवेटिंग लेंचो? प्रथम, जैसे कि अगर देखो कुछ बुरा हो जाता है, फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मत इतना सोच, ठीक हो जाएगा, भगवान है, भगवान सब सही करेंगे, तो यानी कि मैं नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक पॉजिटिव बात कर रही हूँ, मैं आपके अंदर ऑप्टिमिज्म भर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हाँ हम तो बर्बाद हो गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो पता ही नहीं क्या करेंगे, अब तो क्या होगा, ये वाली सारी बातें जो करता है, यानी कि उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड है लाइफ में। लेकिन उसकी वाइफ उसके अंदर एक हिम्मत भर रही थी ये बोल के कि भगवान है, और ऐसा बोला भी जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि भगवान देखने वाला बैठा है, लाइक दैट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर प्रथम? द हेल्प ऑफ गॉड नहीं, द हेल्प ऑफ गॉड मतलब भगवान की हेल्प, ओके, हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब भगवान के तरफ से हेल्प, ओके, तो उसके मन में ये हेल्प थी, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की हेल्प, लाइक दैट। ऑल राइट, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर मानवी? ओके पारस, नो बेटा, मेरे को अभी गाना नहीं सुनाना है, आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है ना, पेपर में पास होना है नेक्स्ट ईयर, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। गाना सुनने के लिए आप आए हो, एक काम करो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, गो एंड चेक दैट। ऑलराइट, जो गाना सुनना है वहां जाके सुनो। ऑलराइट, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस और नो? आगे चले अब हम शोभा, वो हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, क्लियर है? चलो मैं आगे, एवरीवन गिव मी अ हेड्स अप, ओके, देन ओनली आई एम गोना मूव टू द नेक्स्ट वन। कुछ भी क्वेश्चन आता है, समझ नहीं आता है, लेट मी नो अबाउट दैट। ओके कूल, सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या होता है? लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेंचो हैज बीन कंपेयर्ड टू एन ऑक्स, ओके, अगेन अ मेटाफर। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ये मेटाफर है यहाँ पे, ठीक है? फिर से बहुत सारे मेटाफर्स हैं चैप्टर में, मैंने आप लोगों को सब बताए हैं, मेक श्योर आप लोग याद रखो। So Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. So what do we know? That he was a very strong man. Okay, वो ना जानवरों की तरह काम करता था fields में. What does that mean? कि अगर जब एक ox एक field में काम करता है, so ox is very strong. Okay, वो मतलब हल जोतने में बहुत help करता है। तो सिमिलरली लेंचो भी अपने फील्ड में बहुत मेहनत के साथ काम करता था, जैसे कि कोई भी जानवर करता है, ओके, लेकिन उसको फिर भी लिखना आता था। सो दिस इज व्हाट वी आर गोना डू इन हिज कैरेक्टर स्केच, दैट ही वाज अ लिटरेट पर्सन आल्सो बिकॉज ही न्यू हाउ टू राइट, डिस्पाइट बीइंग अ फार्मर ही वाज एजुकेटेड एज वेल बिकॉज ही न्यू हाउ टू राइट। तो द फॉलोइंग संडे, यानी कि नेक्स्ट डे, ठीक है, तो यानी कि ये जो चीजें हुई थी ये सब सैटरडे को हुई थी, रिमेंबर दिस। All right, he was a very hardworking person. All right, so whatever had happened, it all happened on Saturday. Okay, now on Sunday, the following मतलब following का क्या मतलब हुआ? Next day.
ओके नेक्स्ट डे द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक क्या क्या मतलब होता है, डॉन द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपेयर्स, तो वो बिल्कुल सुबह होती है ना जब क्या कहते हैं सनराइज होने ही वाला होता है, ठीक है, वो वाला जो टाइम होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, उसने एक खत लिखना स्टार्ट किया. Okay, it was nothing less than a letter to God. So he was directly writing a letter to God. Okay, it's very important. On which day did he start writing a letter? It was on Sunday. And when did he start writing it? At daybreak, he started writing a letter. Okay, and he decided that he would carry. Would क्यों किया गया? क्योंकि ये एक चीज है. We use would when we are not confident about the time. Like कि हम ये चीज अब कब करेंगे? ठीक है? कुछ imaginary होता है. तो ही सेड कि वो खुद से लेके जाएगा टाउन को, यानी कि पोस्ट ऑफिस लेके जाएगा और मेल बॉक्स में खुद से डालेगा. तो इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ऑलराइटी, ओके. सो इसका नेक्स्ट पार्ट जो रह गया है वो हम करेंगे अभी 12 बजे से. ओके, 12 से 1 करेंगे, फिर हम 2 से 3:30 तक स्पेशल क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एनसीईआरटी के. ओके, कुछ डाउट है? डॉ ब्रेक बेटा संध्या बोलते हैं, हिंदी हिंदी में बोलते हैं संध्या का टाइम. यानी डे ब्रेक होता है कि जब सुबह बस होनी स्टार्ट होती है, यानी कि जब सूर्य सूर्य उदय होना स्टार्ट होता है. ऑलराइट, व्हेन द सन स्टार्ट्स कमिंग अप. ओके, दैट इज नोन एज डे ब्रेक. इज दैट क्लियर? यस बेटा, ज्ञान ट्यूब मैंने अभी अभी सारी बताई, मेटाफोर बताया आपको, सिमिली बताया, दोनों यही चल रहे हैं अभी तक इसमें. ऑलराइट, अर्ली मॉर्निंग. ऑलराइट, yes, yes. Okay, everybody. So the special classes, they are very important for everyone right there. Don't miss them out. That's for your good, okay? Learn live from your favorite educators for free. Engage with educators via polls. Clear your doubts in the live special classes. And for the top special classes, you can always visit the link. So this is what we are going to do. Please make sure that you are becoming a part of it right 2 p.m. Okay, today only I'm going to deal with the NCERT questions and answers of a letter to God. ठीक है, अभी 12 बजे भी क्लास है. ठीक है, 12 बजे आपका नेक्स्ट हाफ में करवाऊंगी जिसमें हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. PSH10 इज द कोड, यूज इट. एंड मैं ये एक्सक्लूसिव प्लस कोर्स सबके लिए लेके आई हूँ. प्लस पे हम पढ़ेंगे, पूरा कोर्स करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में. क्विजेस होने वाली है वहाँ पे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाई होने वाली है. 2022-23 बैच के लिए है क्लासेस. कल से स्टार्ट हो जाएंगी, 6:30 PM है. प्लीज मेक श्योर आप, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो ले लो फटाफट से और मुझे वहां पे मिलो. ऑल राइट, यूज कर लेना कोड PSH10. यस यस, टुडे टुडे निखिल आज ही है बेटा, क्लास आज ही है. ठीक है, कल हम करेंगे 2 बजे, इसका मेंटी क्विज में लेके आऊंगी, लेकिन आज हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं. ऑल राइटी, ओके. नाउ Bugs Bounty, everybody, ये एक opportunity है. All right, for all the learners to report any inappropriate content in the video, be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the form given in the description. And then we have a lot more amazing things. Upcoming batches, okay, for CBSE Class 9, the Mastery batch, we are starting, okay, it has already been started on May 11, okay, it will be on MOT, okay, the mode of delivery would be English, okay, you'll find all the best educators herein, so all the 90s, okay, you have just come in their 9th standard, make use of the code PSH10 and meet us in the very plus classes. Let's solve NCERT, so all subjects, this is for 9th again, we are going to start this on May 18. And the mode of delivery here is going to be English. Okay, be a part of this. Thank you, Prince. Thank you. Similarly, शोभा, जब बेटा हम लोग कंपेयर करते हैं ना किसी चीज को किसी चीज से, लाइक और एज यूज करके, अगर मैं बोल रही हूँ शोभा इज लाइक अ रोज, तो लाइक मैंने डायरेक्ट कंपेयर किया. अगर मैं बोल रही हूँ शोभा इज अ रोज, तो मैंने इनडायरेक्ट कंपेयर किया, वहां पे मेटाफर. सो जब भी अगर मैं बोल रही हूँ शोभा इज एज स्वीट एज रोज, तो वहां पे भी सिमिली हो. Alrighty. Okay. Alright. Feeling of Lynch during the healing. He was so distressed. He was filled with sadness. His soul was filled with sadness. दीपक, ये अभी हमने किया ना बेटा, मैंने आपको समझाया. He was filled with sadness. He was devastated. He was feeling so sad. He was in grief. Okay, clear? Now, let's solve NCERT all subjects for all the 10th. Everybody, May 18 से batch start हो रहा है, जहाँ पे आपके सारे NCERT से related questions होंगे. Make sure that you're becoming a part of it, okay? Then the mastery batch is there, which is again going to be started from May 18. The mode of delivery here is English, but here the mode of delivery is English. Okay, शोभा मैंने अभी समझाया आपको सिविली बेटा, समझ आया? वीडियो चेक करो, आपको आएगा समझ में. ठीक है,
And big announcement for CBSE guys, we are rising the prices soon. Act first to save now. Subscribe now. Use the code PSH10 everybody. If you really wanted to be guided the right way and if you want to study English for your good, for your betterment, because as I always say, English is something which is going to stay with you for your entire life, all right? It's going to be a lifelong partner. So make sure that you're so good at it that you don't face any kind of problem in your professional life later on. You have to be really good at it. Okay, and guys, iconic and plus subscription, this is really really amazing. I want you guys to meet me in the very plus classes, and therein we are offering you the live classes. Weekly tests would also be there, structured courses would be there, and unlimited access would also be there. So please make sure that you are doing good for yourself. Okay, we are going to provide you all the personal guidance, all right, in the iconic subscription. You'll be getting one-on-one guidance from the top exam experts. Test analysis would be there, one-on-one guidance from the top exam experts. Study planner would be there, customized study plan with bi-weekly reviews. Study material would be there, specialized notes and practice tests. Experts guidelines would also be there. Okay, study booster workshop by exam experts. So make sure that you're becoming a part of everything that's really going to be good for you all. Alrighty. So we have got different monthly plans. Everybody start planning right from now. This is the start to your career now. Do good for yourself. Just go ahead with any plan that suits you the best, be it 48 months, 42 months, 36, 24, 18, 15, 12, 9, 6 or 3. You all can always make use of my code PSH10 wherever you need it for your good, for your betterment. Okay, that's gonna be really really helpful. All right, so discuss about this for with your parents. Pushpendra, thank you. Deepak, thank you. Prince, thank you. Hi, Pushpendra. Hi, Manvi. Manvi, thank you, dear. Thank you, everybody. Now, iconic everybody, 48 months, 36 months, 24, 18, 15, 12, 9, 6, and 3. Okay, PSH 10 is the code. Guys, just make sure one thing that if you're going to go ahead with iconic, no, you're going to get all the benefits of plus as well. But in plus, you're not going to get the benefits of iconic. So you have to think wisely for it. Discuss about this with your parents. It's Sunday today. You can talk to your parents about it. And you can definitely become a part of the exclusive plus batch that I'm going to start right from tomorrow. Don't miss that. That's really really important for all of you. Okay, and community, which is very very important for everybody. You never miss any update from your favorite educator. If you haven't downloaded the app yet, kindly do that, because I'll be sharing all the updates there, and I'll be sharing the PDFs of all the sessions there only. You all can get these sessions notes and practice material. You all can share your feedback directly with educators via posts, and definitely you can check out the link to my community app right from below. Hey Piyush, hi dear, hi, hello, welcome to the very class. And Bugs Bounty is there, okay. So let's crack competitive exam, guys. This is amazing. I hope that you're becoming a part of it, okay. May 15th, this is like 11 a.m. today only we have this webinar, which is really, really amazing, okay. We have got the amazing mentors with us, okay. Ashish Arora sir and Anuja Arora ma'am, they are their national heads academics at Unacademy. You can learn the key factors for success in competitive exams, like how you all can crack the competitive exams along with your school. And competitive exams, they are very very important for your good. So you can understand the common mistake learners to do in their academic journey, implement the effective study techniques to achieve maximum output in available time. And we have these amazing mentors. You can join it right away. Alrighty people, so thank you everybody. I hope that you all loved the session. Do not forget to share it with all your friends, and definitely hit the bell button if you are new to the channel. Subscribe the channel, like and share it. Okay, like it and share it with your friends. I'm gonna catch you all right at 12 p.m. Okay, we are gonna cover the rest of the chapter, and after that we have got the special class. Please make sure you're enrolling for it, and if you haven't enrolled for it, then kindly do that. No worries, friends. Take care, guys. Bye bye. See you soon.